Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about D.H. Lawrence. His lifespan was 1885 to 1930. It means he died at the age of 44. His full name was David Howard Lawrence and he was English writer and poet of modern age. He born on 11th September 1885 in Eastwood, England and he died on 2nd March 1930 in Venice, France. और वो हाउस यहाँ पे लॉरेंस का बर्थ हुआ था 8 विक्टोरिया स्ट्रीट में, वहाँ पे अब D.H. लॉरेंस का बर्थ प्लेस म्यूज़ियम है। उनके फादर थे आर्थर जॉन लॉरेंस एंड ही वॉज ए माइनर एट ब्रिंसली कूलियर, एक कोल माइन में काम करते थे वो नटिंगमशायर में। और लॉरेंस के फॉर्मेटिव ईयर्स, उनके चाइल्डहुड के ईयर यहीं पे स्पेंड हुए थे कोल माइन में, जो कि ईस्टवुड नटिंगमशायर में थी। और उनकी मदर थी लीडिया बेर्टसेल। उनको भी एक लेस फैक्ट्री में वर्क करना पड़ता था क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और वो फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नोटिंगम हाई स्कूल में अकाउंट्री काउंसिल स्कॉलरशिप विन की थी 1898 से 1901 तक। और उन्होंने 3 मंथ्स तक एज ए जूनियर क्लर्क वर्क किया था एट हेवुड सर्जिकल अप्लायंस फैक्ट्री में, पर उनको निमोनिया होने की वजह से उनके करियर का एंड हो गया। आफ्टर लॉरेंस नियरली डाइड ऑफ निमोनिया, लीचिया डिवोटेड हरसेल्फ टू हिम। तो जब वो उनकी हालत मरने जैसी हो गई थी तो उनकी मदर ने उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, उन्होंने अपनी लाइफ को उसके लिए डिवोट कर दिया। एंड 1902 टू 1906 लॉरेंस ने एज ए प्यूपल टीचर वर्क किया था ब्रिटिश स्कूल ईस्टवर्ड में। And he also started writing poems, novels, short stories, and his works shows bad effect of modernity and industrialization humanity. And his works explore issues like sexuality, emotional health, vitality, spontaneity, and instinct. तो उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स में सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ और सोसाइटी के बैड इफ़ेक्ट्स को शो किया है, जिस वजह से उनके कई वर्क्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। और 1910 में उनकी मदर की कैंसर से डेथ हो गई थी एंड इन नवंबर 1911 ही कम डाउन विद pneumonia again and once recovered he abandoned teaching in order to become a full-time writer. तो 1911 में उनको दोबारा से न्यूमोनिया हो गया था और फिर से वो रिकवर हो गए थे और उन्होंने फिर अपनी टीचिंग जॉब छोड़कर फुल टाइम राइटर बनने का सोचा। And in March 1912 he met Frida Weekly with whom he spent the rest of his life. Lawrence and Frida returned to Britain shortly and were legally married on 13th July 1914. और इस टाइम पे जो लॉरेंस थे वो लंदन के इंटेलेक्चुअल राइटर्स के साथ वर्क कर रहे थे, सच एज T.S. Eliot, Ezra Pound. In March 1925, he suffered a near fatal attack of malaria and tuberculosis. And he returned to Italy and made their home in northern Italy. And during his final years, Lawrence renewed his serious interest in oil painting. And in his last months, he wrote numerous poems, reviews, and essays. He died on 2nd March 1930 in Venice, France, from complication of tuberculosis. He was buried in Vence, France, but in 1935 his ashes were carried to New Mexico, where his wife had acquired her property. Now let's discuss about his major works. सबसे पहले हम उनके नॉवेल्स देखते हैं। द वाइट पीकॉक, ये उनका फर्स्ट नॉवल था और ये पब्लिश हुआ था 1911 में, पर इस पेज के टाइटल पर 1910 लिखा हुआ है। एंड द नॉवल इज सेट इन नीदरमेयर, जो कि एक फिक्शनल नेम है। और ये नॉवल नरेट किया जा रहा है बाय साइरल बेयर्डसल, जिसकी सिस्टर है लेटिटिया, इन शॉर्ट लैटी, एंड शी इन्वॉल्व्ड इन लव ट्रायंगल विद 2 young men, George and Leslie Temple, and she eventually marries Leslie even though she feels sexually drawn to George. नेक्स्ट नॉवल है उनका द ट्रेसपासर, जो कि 1912 में पब्लिश हुआ और इसकी ज़्यादातर सेटिंग जो है वो आइल ऑफ वीट में है। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सिगमंड, अ मैरिड मैन विद चिल्ड्रन, एंड हिज अडल्टरस अफेयर विद हेलेना।
ओरिजिनली इस नावल का टाइटल था सागा ऑफ सिगमंड एंड इसकी स्टोरी जो है वो लॉरेंस ने अपनी एक फ्रेंड हेलन क्रूग के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी थी, जिसका कि अडल्टरस रिलेशनशिप था विद अ मैरिड मैन, और उसने बाद में सुसाइड कर लिया था। एंड लॉरेंस ने कॉक की डायरी के ऊपर वर्क किया था उसकी परमिशन के साथ, हेलेना की परमिशन के साथ, और बाद में उन्होंने उसको इसे पब्लिश करने के लिए भी बोला था, विच शी डिड इन 1933 एज न्यूट्रल ग्राउंड। नेक्स्ट नॉवल है उनका सन्स एंड लवर, which published in 1913, and it takes place in late 19th century England and tell the story of a man so emotionally connected to and influenced by his mother. उनकी मदर का उस पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था दैट ही अनेबल टू फॉर्म लास्टिंग रिलेशनशिप व्हेन ही एनकाउंटर अदर वुमेन। And Sons and Lover was concluded in a aftermath of the death of Lawrence's own mother, and his experience with grief shaped the events of the novel, and death is portrayed as an ever-present force in the novel, something which is both terrifying and at time terrifying seductive. Next novel है उनका The Rainbow, जो कि 1915 में publish हुआ, and it follows 3 generation of the Brangwen family living in Nottinghamshire, which focusing particularly on the individual struggle to growth and fulfillment with the confining structure of English social life. Next novel है Women in Love, 1920 में publish हुआ. It is sequel of the early novel The Rainbow and follows the continuing love and lives of the Brangwen sisters, Gudrun and Ursula. Gudrun Bragban, an artist, pursue a destructive relationship with Gerald Cringe, an industrialist. Next is The Lost Girl, which is published in 1920. It is forgotten novel, is a passionate tale of longing and sexual defiance, of devastation and destitution. Alvina Horton, the daughter of a widowed Midland draper, comes of age just as her father's business is falling. Next है Aaron's Road, Kangaroo, The Boy in the Bush, The Plumed Serpent, Lady Chatterley's Lover, The Escaped Cock. Some short stories written by him, The Prussian Officer and Other Stories, Saint Maur and Other Stories, The Rocking Horse Winner, The Virgin and the Gypsy and Other Stories, Love Among the Haystack and Other Stories, The Lovely Lady and Other Stories, England My England and Other Stories, The Horse Dealer's Daughter, Mother and Daughter, The Fox, The Captain's Doll, The Ladybird. Poetry collections by him. He wrote almost 800 poems, most of them relatively short, and his poems reflect the influence of Ezra Pound, and his most famous poem was The Ship of Death. Some other poems are Love Poems and Others, Amorous, Look We Have Come Through, New Poems, Be, A Book of Poems, Tortoise, Bird, Beast and Flowers. So this is all about D.H. Lawrence's life and about his works. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.